Okay, so today we start from the Docker, okay, and Docker concept, okay. So today we go through the Docker introduction part, okay. Why Docker comes in picture and why we use Docker, and before the Docker concept, how the application deploy or how the application are execute on traditional process, okay. So now we discuss about Docker concept. Now market all the applications are running through the Docker concept as a containerization platform, okay. So why this container concept comes in picture, okay. Now discuss on that point, okay. So let's start from what is Docker, okay. Docker is nothing a platform, okay, nothing as a platform which like work as like a pass. Do you have idea on pass? Pass means platform as a service, okay. So suppose you have created a application, okay, and then I just talk about before Docker, okay. Suppose you have created a application and you want to host this application to a particular server, right? Okay, and this application built by, okay, in Linux, okay, Linux OS, okay. Suppose this application built through the Linux OS, okay, and you have to host your application, means deploy your application in a Linux OS, right? Okay, and for this application you have to require from web servers, right? Install within your Linux machine, right? Then your application will be run and then user can be accessed, right? So if I go through this some tools, suppose I have created a Java application, okay, and from the Java application we mostly build through the Maven or Gradle, right? Some build tools. We are using some build tools, and from this build tool we generate a artifact, okay. Through this artifact, or that means jar or var, okay. Through this jar var we execute on a web server, okay. That means your Tomcat, okay, server, okay. When you put your jar or war file within the Tomcat server, then we can able to access our application, right? Someone user here and it is able to access the application, right? Then for these tools need to install within your Linux server, right? Means you install your Tomcat server on your Linux server, okay. For example, if you use a application or create a application that is Windows based, okay. Similarly, you have to install the application dependency and then you can run this application on a Windows server, right?
then someone user can be access. Okay, that means this application depends on your OS level, right? Okay, I'm talking about before the Docker traditional process. Okay, similarly, if you use Mac OS, okay, similarly you can use this OS related dependency, and then you can use your application packages. Then one user can be accessed. Okay, but it is like segregate your application different platforms, right? To overcome this issue, the Linux kernel based one service is comes in picture, that is called Docker. Docker mostly run on Linux base. Okay, why we called Linux base? Okay, why we called this Linux base? Okay, mostly Docker is nothing but it is a like a VM. Okay, that means Docker mechanism work through a container. Okay, work through a container. Okay, there is another concept is called container. Okay, so why and how this Docker and container concept comes in picture? Okay, basically we called Linux based controller means, that means LXC. What is the meaning of LXC? Linux containers. Okay, that Docker work as a Linux container. All these containers working through the this Linux base. Okay, and containerization technology. Containerization technology. Okay, what is that meaning? Okay, suppose how it benefits from the traditional application deployment to containerization deployment process. We depends on traditional depends on OS related, right? OS base means Windows, Linux, and Mac. Okay, but after the Docker concept, okay, we do not depends on OS version. Okay, that means we install only as a platform that is called a Docker platform. Okay, within our machine or within our server, that may be Windows, Linux, or Mac. Okay, got my point or any doubt? Okay, okay, that means we deploy our application, okay, through the traditional process we are based on OS related. Okay, but when we deploy our application as a Docker container, okay, or Docker concept, we do not need the OS platform. That means we only install that software or that platform. Okay, Docker is nothing but it is a platform or that is a software. Okay, through this software we can provision
our application as a container. Okay, we can provision your application or run as a provision your application as a container. Okay, got my point? Okay, okay, okay. By the use of a Docker, okay? Yes. Yogendra, right? Okay, okay. No, no, no. I'm talking about like a Docker concept, okay? So in that case, if you want to provisioning or deploying your application as a containerization platform, okay? So in that case, we do not need a OS because if you see here, I just told in a traditional process, if you want to create your application, first dependency is which OS you want to provision your application. Okay. Then you create your application as your OS related. Okay. But after the Docker concept, you no need to create your application OS dependency. Okay, you can just create your application and you can run on any other operating system that may be or OS, that means Windows or Linux or Mac. Okay, okay. So here in Docker concept, okay, suppose you want to create a application. Okay, I'm just repeating that. I want to create an application. Okay, but before this creating application in traditional process, we need to requirement in which OS it will be run, right? So in that case, when we use the Docker concept, we no need to which OS that application will be run. We no need because we run our application as a Docker platform, as a containerization platform. Okay, that may be your Windows, that may be your OS like Linux, that may be your Mac. Okay, in this case, how it will work? Only you need to install this Docker software. Okay, once you Docker install on your OS or any server, that case it will provision your application as a container. Okay, got my point or any doubt? Yeah, in traditional process, okay, ट्रेडिशनल प्रोसेस में क्या हो रहा था, हमारा जो एप्लीकेशन जब बनाते हैं ना, उस टाइम पे हम लोग को चाहिए कौन सी प्लेटफॉर्म में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम पे मेरा एप्लीकेशन चलेगा। उस केस में हम क्या करेंगे, डिफाइन करते थे। मीन्स हम जब ट्रेडिशनल यूज कर रहे थे बिफोर द डॉकर, ओके, मीन्स अगर लिनक्स में चलेगा तो लिनक्स डिपेंडेंसी डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर हमारा विंडोज में चलेगा तो विंडोज डिपेंडेंसी हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर मैक में चलाना है तो मैक का डिपेंडेंसी डाउनलोड करना पड़ेगा। बट जब हमारा डॉकर प्लेटफॉर्म आ गया, उसमें हमारा क्या हो गया, जो भी एक एप्लीकेशन आप बना दो, उसको बस डॉकराइज कर दो, ओके, कंटेनराइज कर दो और एक इमेज बना दो, ओके, उसको लेके तुम जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया,
उसमें अगर इंस्टॉल हुआ है डॉकर, तो उसमें आप आपका एप्लीकेशन चला सकते हो। ये है कंसेप्ट। उसमें क्या हो रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंसी होता था। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे बस डॉकर को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन चलेगा। ओके, कैसे चलेगा उसके बाद हम देखेंगे। ओके, वो आएगा कंटेनर प्लेटफॉर्म। बट अभी तक हम हैं कहाँ पे, जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस और डॉकर। ओके, उसके बाद हमारा एप्लीकेशन कैसे चलेगा, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में जब हम कंटेनर पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके। हाँ, बोलो बोलो। राइट। हम्म 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 हम्म, हम्म। तो एक्चुअली एक्चुअली कौन बता रहा है, मैं तो देख नहीं सकता कौन बता रहा है। सुमित, ओके। ओके सुमित, हाँ, मैं आपका जो पॉइंट है, ओके, मुझे मिल गया है। बट मैं अभी तक वहां पे नहीं गया हूँ। ओके, मैं कंटेनर नहीं स्टार्ट किया है। आपने जो बोला कि पीआईडी है, एज ए होस्ट ओएस में चलता है, वर्चुअलाइजेशन करता है। ओके, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। ओके, मैं बस आज यहाँ पे स्टार्टिंग किया हुआ है। ओके, मैं बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। डॉकर, उससे पहले क्या हो रहा था, उसके बाद क्या हो रहा है, और अभी उसको चलाने के लिए क्या क्या चाहिए। ओके, ये सब कुछ हम बताएंगे। एकदम क्लैरिटी आ जाएगा पिक्चर डॉकर क्या है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, या। श्योर श्योर। Yeah, yeah. Only. I'm just saying. Okay. For example, if I say here, okay, suppose you are using a Linux machine, okay, Linux computer, okay, okay. So, if you want to, okay, if you want to launch your application as a container platform, okay, you have to need like install the Docker, right, first, okay. Then, okay, then you decide about your application level, right? Yes, yes. That means that is my OS. Okay. I install the Docker. Okay. Then I decide which type of first question is here, which type of application, right? And for running this application, what is the need, right? Then if you use, for example, that is Nginx, right? Like your HTML application, okay? HTML and CSS application. If you want to like provision your application like your Nginx or Apache, right? Then you decide about as a Docker container, that is my Apache and Nginx. I will use base OS and I will host my application, right? But here, till the installation part, okay, no need to dependency, because if you want to install your Docker,
on your Linux, you can install. If you use your Docker in your Windows, then you can install. Then if you want to install as a Mac, then you can install. Okay, I am talking about this position, not talk about here. Okay, because in containerization and the application level, I'm not reached there. Okay, I'm still here. Right, right, right. Okay, then we decide in my Docker platform, my application will be run. Okay, that means my application run means for my application dependency, I will put my Docker container, right? That is if you see, if you segregate here till point, okay, that means just a second. Okay, that is two part. If you come to here, okay, that is two part. I'm talking about two part. That is, one is OS plus Docker, another is application, okay, and container. Got it? That means I'm not reach here. Okay, I'm here. Okay, how Docker, how Docker and related to OS. Okay, what is VM? Okay, and this thing we discuss. Then once we cover on that point, then come to our application related. Okay, how as a container running, what are the platform requirement for a container? Okay, how container running, what is the process, what is the process ID? Okay, we'll discuss on that point. Okay, okay. Any doubt till now? You can freely ask any question. कोई भी कोई भी डाउट है तो बिंदास पूछिए मुझे. ओके, मैं पा हूँ. ओके ओके. हाँ, ओके ओके. अगर अगर कहीं पे स्टॉप हो जाते हो तो अभी उसमें बोल देना कि और एक बार हिंदी में बोल दो. ओके ओके, क्योंकि सभी को एक एक पॉइंट में डाउट रह जाता है. ओके, मुझे बोल देना, मैं बता दूंगा. ओके, बट कंफ्यूजन मत रखो. ओके ओके, या. So here we discuss on that point like our OS and Docker, right? Okay, OS means my laptop, right? My Windows laptop. Talk about my Windows laptop and that is installed Windows 10 or 11, right? Okay. For example, I want to install Docker. Okay, that is Docker desktop, right? Or anything. Okay. But how Docker install and how Docker will work? Okay. In that case, there are two concepts. If you see here, okay, my presentation describe about what is the difference between like a virtual machine and Docker. Okay. What is the virtual machine and Docker? Okay. If you see here, I'm giving one example. Okay. I'm using now Windows operating system, right? Okay. It is possible I can provision a Linux server on this machine? Yes or no? Can I create a Linux machine from here? Yes or no? Yes? Really? How? How? So, what is Oracle VirtualBox? Very good. And through the VirtualBox, okay, how a operating system work? That means I'm talking about, you talk about, that is my that is my Windows OS, right? Windows 10, and I have installed
virtual box, right? And then here I will install another OS, right? How it work? What are the mechanism from here? Any idea? Right. Okay. Right. So in this concept, okay, in this concept, I am using Windows 10 operating system, right? And I want to provisioning a Linux server or creating a Linux server from here. Okay. But how? In that case, Windows provide a hypervisor or Hyper-V. Okay. Hyper-V or hypervisor. Okay. That means it is a platform, it is a layer, okay? It is a virtualization layer. It is called virtualization layer, okay? From this virtualization layer, I will create a OS or I will create a OS. That means that is your Windows, Linux, or different, okay? Okay. So in that case, how they will get the resources? It will be get resources from the Windows machine. Okay, that means suppose my RAM is 16 GB, right? In that case, I will distribute for this OS. Okay, means 2 GB. Okay, that means it acquire the memory space from this 16. Okay, that means it minus. Okay, it deduct the RAM size from this Windows machine. That means it is the host machine and this is guest machine. Got it? Or any doubt? मान लीजिए आपके घर में ओके कोई मेहमान आ गया ओके तो मेहमान कहाँ से खाना खाएंगे आपके घर से ना राइट थोड़ी ना वो होटल जाके खाना खाएंगे ओके तो आपके घर में जो भी खाना है तो वहां से ही खाना खाएंगे राइट तो ये है हमारा होस्ट मशीन है ओके ये हमारा घर है और कोई गेस्ट हमारा यहाँ पे आया हुआ है तो मतलब ये जो विंडोज मशीन है ये मेरा होस्ट मशीन है और होस्ट मशीन का जो भी रिसोर्सेस होगा 16 GB का उसमें जो भी हम प्रोविजनिंग करेंगे यहाँ पे ओएस रिलीज करेंगे वो जो रिलीज हो जाएगा जितना जीबी हम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना वो क्या करेगा यहाँ से डिडक्ट कर लेगा ओके तो मतलब यहाँ पे जब हमारा ये सर्वर लॉन्च हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो सिस्टम का होस्ट का मेमोरी साइज कितना दिखाएगा 40 GB होगा राइट ओके तो ये 14 GB में तो ये क्या करेगा फिर चलाएगा ओके तो अगर हम यहाँ पे 4 कोर का सीपीयू है ओके 4 कोर का सीपीयू है अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 कोर दे देंगे तो ये क्या करेगा 2 कोर से सॉरी 4 कोर से 2 कोर माइनस कर देगा राइट तो ये माइनस करके ये भी चलाएगा राइट बट यहाँ पे क्या होता है दिक्कत होता है ओके क्या दिक्कत होता है वीएम में ओके जब एक ओएस आप रिलीज करते हो ना ये टाइम टेकिंग होता है राइट टाइम टेकिंग ज्यादा टाइम लेता है इट टेक मच मोर टाइम ओके तो यहाँ पे अगर मैं 10 या 15 सर्वर क्रिएट करना चाहता हूँ ओके तो यहाँ पे तो मेरा रिसोर्सेस नहीं है तो अगर ये प्रोविजनिंग हो जाएगा तो क्रिएट हो जाएगा तो कैसे चलेगा मेरा जो होस्ट सर्वर है वो तो डाउन हो जाएगा ना हैंग हो जाएगा ना राइट तो ऐसे में हम क्या करेंगे ओके मैं थोड़ा डीपली जाता हूँ ओके आप लोगों को तो पता चल गया है राइट वर्चुअल बॉक्स ये सब कुछ ओके थोड़ा डीप जाता हूँ ओके
एक्चुअली हमारा कंसेप्ट कैसे होता है, वीएम और डॉकर का कंसेप्ट क्या होता है। ओके, तो मान लीजिए ये मेरा, ओके, ये मेरा होस्ट मशीन है और ये मेरा हार्डवेयर है। ओके, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म रहता है कि नहीं, आपका कोई अगर कोई लिनोवो का सर्वर है या जो भी सर्वर है। ओके, आपके लैपटॉप हो गया, उसमें तो कोई हार्डवेयर होगा, रैम, सीपीयू, राइट, हार्ड डिस्क। ओके, तो ये हो गया आपका हार्डवेयर लेयर। ओके, उसके ऊपर आपने क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं ओएस, राइट। We install above the hardware platform, we install the OS platform. Okay, that means your Windows 11 or 10, okay, or Linux. Okay, then you want to provision another operating system. Means here I have installed Windows 10 operating system, and above the Windows 10 operating system, I want to create a Linux server. Okay, so in that case, we need a hypervisor, right? Okay, so we need to install the hypervisor. Okay, then we create a Linux machine or Linux VM, right? Okay, so in this case, in this Linux OS, there is also a OS layer, right? There are some dependency libraries is there, right? And then we host our application, right? It is easy or it is difficult? You got my point or any doubt? For example, okay, you want to create a or provisioning your application, that is app 1 and app 2. Okay, that is created by Nginx and another is Tomcat. ओके, मान लीजिए आपका दो एप्लीकेशन है, आप उसको चलाना चाहते हो। ओके, किसमें, आपका एक एप्लीकेशन है इंजीनिक्स में और एक एप्लीकेशन है आपका टॉमकैट में। ओके, तो इसको अगर आप क्या करोगे, आज ये वर्चुअलाइजेशन बनाओगे वीएम करके, यहाँ पे क्या करोगे, एक हार्डवेयर रिसोर्सेस होगा आपका जो होस्ट मशीन का, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे, उसके ऊपर क्या करोगे, फिर एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करोगे, राइट। हाइपरवाइजर करने के बाद आप क्या करोगे, और एक ओएस इंस्टॉल करोगे, राइट। और एक ओएस इंस्टॉल करने के लिए वो जो लिनक्स सर्वर होगा या जो भी सर्वर होगा, उसका तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ना, राइट। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलने के लिए उसका कोई तो लाइब्रेरी चाहिए, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, आप वन को यहाँ पे इंस्टॉल करोगे और चलाओगे, राइट। सिमिलरली और एक वीएम बनाओगे। ओके, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, राइट, और उसका जो लाइब्रेरी रहेगा, और उसके बाद आपका ऐप टू चलेगा। दैट मीन्स मैं इस वीएम में nginx इंस्टॉल कर दूंगा, ओके, और इस वीएम में टॉमकैट चलाऊंगा। ओके, ये अच्छा प्रोसेस है या और उससे भी इजी कुछ प्रोसेस है? ओके, ओके,
तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस, राइट। और इसमें हम क्या करते थे, डिपेंडेंसी होता था। डिपेंडेंसी मीन्स ये जो मेरा एप्लीकेशन है किस प्लेटफॉर्म में चलेगा, किस ओएस प्लेटफॉर्म में चलेगा, उस ओएस प्लेटफॉर्म में मैं क्या करता था, इंस्टॉल कर रहा था। ओके, दैट मीन्स ओएस डिपेंडेंट। ओके, that means called platform dependent, platform independent and platform dependent. Okay, that means ये जो हमारा एप्लीकेशन प्रोविजनिंग हो गया, ये ओएस के डिपेंड हो गया। मैं मतलब मैं अगर टॉमकैट चलाऊंगा, ये मुझे बोला है कि तुम एक काम करो, इसमें विंडोज चला दो। ओके, और ये विंडोज सर्वर में टॉमकैट इंस्टॉल कर दो, टॉमकैट चला के वहां पे डाल दो। ओके, तो अगर कोई बोलता है कि नहीं तुम एनजीएनएक्स चला रहे हो, तो फिर हमारा लिनक्स सर्वर ले लो और उसमें हमारा एप्लीकेशन आप वन को डाल दो। ओके, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये जो वीएम स्ट्रक्चर है उसको आप यूज करोगे। ओके, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉकर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें से और डॉकर का कंसेप्ट क्या फर्क है, क्या डिफरेंट है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीएम एंड डॉकर। ओके, डॉकर ऑल्सो need a platform which is like a hardware. Okay, and second layer is like called similarly, there is a OS layer. Okay, and the third layer is like called Docker engine. Okay, Docker engine, that means when we install the Docker, there is a Docker engine will install. Okay, in Docker engine, the Docker containers are running. Okay, in the Docker engine, Docker containers are running. That means we no need the OS again. Okay, we need only libraries. Okay, and application. Okay, app1 and here libraries and app2. Okay, so if you see here, if you matching, that is hardware is matching and OS is matching. Okay, but here it is used hypervisor, here we use Docker engine. Okay, here we use need to, here we need like OS. Okay, OS, but here we no need OS, only the library file is required to running the application. Got my point? Got my point? That is container, it also a container. Okay, because if I talk about, okay, if you install a OS, minimum OS is a 2 GB, right? Suppose you want to download a OS, that is minimum to be 2 GB, right? But if I use here 2 GB, that will take much time, right? It is equal to VM, right? What is the difference between, if we use Docker concept and again we use here the OS, then it is not different from VM to container. Okay, Docker concept. Okay, so here OS is not complete requirement. Here is only requirement library. What are the library? To running this application. Only if you use a nginx container, okay, nginx image, then it is not, it does not download, okay, all the OS related files, only download the libraries. That means for running a container, running the application. Okay, not complete the OS. Okay, whatever the library require, that only this container download. Okay, that's the reason it is very lightweight. Okay, got my point, right?
Okay. That means if I segregate and just explain again, for a container run application, okay, okay, collecting the libraries, okay. That means if I use Nginx, okay, then that application need to the Nginx, but not complete the OS, okay. It collect the libraries only for running this my app one application, okay. It only collect the libraries and then run in the as a container, okay. Got my point, right? Or any doubt? Okay, I just explain again, okay. Suppose if you see in your mail, okay, in your mail, that is you want to send a file, okay, that is 35 MB, okay. But when you want to send this file, it is not able to send through the Outlook, right? But when you compress it, it's showing 20 MB, right? Then how this file also present on that directory in zip file directory, but how it will compress? Because it need to the file requirement libraries or binary files, okay. You just compress the size of these files, okay, so that it will compress the rar file or a zip file, okay, so that 7-zip, right, so that it will be sent from the Outlook. Similarly, the Docker contain all the compressed OS, compressed OS. That means in our Docker Hub, if you see, all the packages are present, right? If you see, suppose someone asks you, download Windows 10, okay, Windows 10 OS, okay. If you now you go to the Microsoft and download this OS, it contain 8 GB, okay. If you see, that's true, okay. If you download from the Microsoft the Windows 10 package, then it is come to 8 GB, okay. If you go to Docker Hub, okay, and search, okay, Windows 10, okay, image, that means it also work and it also work. Then what is the difference? Difference means it only compressed for OS running. How the OS running, what are the file required, then it compress those files and generate a image, okay. अगर मैं और एक बार हिंदी में बता देता हूँ, अगर आप मान लीजिए एक विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे तो वहां पे आपको देखोगे 8 GB लगेगा, ओके। तो जब जब आप वही ओएस को अगर आप चलाना चाहते हो एज ए कंटेनर, ओके, तो वहां पे जाके डॉकर हमें सर्च करोगे तो वो आ जाएगा आपको सम एमबी में, ओके। तो ये कैसे होता है, कैसे होता है मतलब ये ओएस चलने के लिए, ओके, जो भी, ओके, डीएलएल फाइल विंडोज में क्या होता है डीएलएल, राइट, और लिनक्स में हमारा बाइनरीज, राइट। तो ये डीएलएल फाइल जो चाहिए हमारा विंडोज को 10 को चलाने के लिए, वो फाइल को वो क्या करता है, कंप्रेस कर देता है, एक पैकेज बना देता है, उसको हम बोलते हैं इमेज, ओके। अगर हम इसको लाके आज चला देंगे तो वो क्या करेगा, चलाएगा, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसमें हमारा एप्लीकेशन डाल देंगे वो चलेगा। हम लोग को 8 GB नहीं चाहिए, राइट, हम लोग को एमबी में चाहिए, राइट। तो ये लाइट वेट हो गया,
जो लाइट वेट है वो अच्छा चलेगा या जो हेवी वेट है वो अच्छा चलेगा? क्योंकि हमारा ये भी हमारा रिसोर्सेस को गेन कर देगा ना, मतलब हमारा ये जो भी हार्डवेयर होगा उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा कम यूज होगा और ये जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा और बंद भी हो जाएगा। इसको अगर हम चलाएंगे तो ज्यादा रिसोर्सेस ले जाएगा, टाइम लगेगा, राइट, टाइम टेकिंग, राइट। तो इसके लिए हमारा डॉकर कंसेप्ट आ गया। अभी समझ में आ रहा है वीएम एंड वीएम एंड डॉकर के बारे में डिफरेंस? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एनी डाउट टिल नाउ? एनीवन एल्स? शाहिद, सुमित? ओके ओके। अनिकेत? अनस? अनस, मोहम्मद अनस? ओके ओके ओके। तो हम थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं। What is Docker? Okay, Docker is a software platform which allow you to build, test and deploy applications. तो ये जो प्लेटफॉर्म है डॉकर का, ओके, ये हम उसके थ्रू हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं और डिप्लॉय भी करते हैं। ओके, डॉकर पैकेजेस सॉफ्टवेयर इनटू स्टैंडर्डाइज यूनिट्स कॉल्ड कंटेनर। मैंने जैसे बताया वो क्या करता है, हमारा जो एप्लीकेशन पैकेज है, सॉफ्टवेयर है, ओके, वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में क्या करता है, उसको कंटेनर, एक पैकेज बना देता है। ओके, उसको हम बोलते हैं क्या, कंटेनर। ओके, जैसे हम लोग जीप बनाते हैं, हमारा कुछ आप डॉक्यूमेंट है, हम उसको क्या करते हैं, जिप करके रखते हैं, राइट। तो उसी 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 टाइप का हमारा क्या होता है, डॉकर क्या करता है, उसको पैकेज करके स्टोर करके रखता है एज ए कंटेंट। ओके, इट कंटेन एवरीथिंग द सॉफ्टवेयर नीड्स टू रन। जैसे मैंने बताया था जस्ट प्रीवियस स्लाइड, ओके, in paint, okay, it contain everything the software needs to run including libraries, system tools, code and runtime. Okay, that means it contain everything. Everything means whatever need to my software will be run. Okay, the dependency to run my application, that should be download. Okay, or include like libraries, system tools, code and runtime. Runtime is nothing but it is the engine. Okay, runtime engine. Okay, using Docker you can quickly deploy and scale application into any environment. That means through the Docker you can quickly deploy. That means we can provision our application, okay, launch our application and scale means you can today you want to two container running, if you want to another 10 container, the same application can be scaled. Okay, that means you can easily scale up and scale down your application containers, okay, into any environment. Any environment means that is like OS environments. Okay, that means Windows, different environment. You can scale up and scale down. Okay, so Docker versus virtual machines. Okay, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हमारा हार्डवेयर। ओके, हार्डवेयर, और यहाँ पे ओएस भी रह गया, राइट। उसके बाद हमारा क्या हो गया, हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर हम इंस्टॉल कर दिया। ओके, उसके हमारा हमारा क्या होता है, गेस्ट ओएस रहता है। गेस्ट ओएस मीन्स हमारा जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हम लॉन्च करेंगे, राइट। और उसके बाद हमारा क्या होता है, बाइनरी एंड लाइब्रेरीज को हमारा लॉन्च कर स्टोर करता है
उसके बाद हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे चलता है। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तीनों एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये 1, ये 2 एंड 3। ओके, बट अगर कंपैरिजन करेंगे डॉकर कंटेनर में, हमारा क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दैट मीन्स हमारा हार्डवेयर एंड ओएस, ओके, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, उसके ऊपर हमारा कंटेनर इंजन। ओके, ओनली वी नीड टू इंस्टॉल द डॉकर इंजन। ओके, डॉकर इंजन। ओके, once we install the docker engine, then we can run as a container. Okay, we know container means it collect the binaries and the library files, okay, for need to launch our application. Okay, that means it is not complete download the OS, it only download the binaries or libraries, okay, which run our application. Okay, so that it is very lightweight and very useful and scalable. Okay, so now we come to our theory part. Each VM run its own OS. That means each of the VM, here is a one VM, here is a one VM, here is the one VM. Okay, each VM running with the own OS. That means it is required own OS and own OS. That is three OS is required, right? Boot up time is in minute. Boot up means if you see on the beginning of the class I am using vagrant up. That means I am booting the server. What is the meaning of a booting? Boot up means boot two types. Okay, boot two types. Okay, that means one is a warm boot, another is cold boot. Okay, what is the meaning of a warm boot and a cold boot? When you start your OS, okay, that means it is cold boot. Okay, when you launch your application, sorry, OS and or VM, when launch your VM and you need to restart it, that means it called warm booting. Got it? Just for hints, जब हम स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। ओके, जब हमको रिस्टार्ट करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। ओके, गॉट इट? ऐसे ही याद रखो। ओके, तो हम मोबाइल ऑन करते हैं, जब सुबह सुबह उठते हैं अच्छे से अगर मेरा मोबाइल रेडी ऑन हो गया तो ये मेरा कोल्ड बूटिंग हो गया। ओके, जब मेरा मोबाइल चला रहा हूँ और कुछ हैंग हो गया, ओके, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, रीबूट करता हूँ, राइट? तो उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। ओके, सो इसीलिए बूट अप टाइम इज इन मिनट। तो ये मिनट में हमारा सर्वर को बूट अप करता है, मीन स्टार्ट करता है। ओके, कैनॉट रन मोर देन कपल ऑफ VMs ऑन एन एवरेज लैपटॉप। अगर आप चलाओगे एक एवरेज लैपटॉप में, तो आपका जो सर्वर है आपका लैपटॉप में, वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चलेगा, वो हैंग हो जाएगा। जो हमारा पिछले क्लास में भी कुछ बंदे हैं जो सफ़र कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपका हार्डवेयर रिसोर्सेस अच्छा होगा, ओके, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपकी लैपटॉप में आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्वर लॉन्च कर सकते हो। ओके, गॉट माय पॉइंट, राइट? अगर मान लीजिए मेरे लैपटॉप में, ओके, 8 GB का रैम है, राइट? ओके, तो उसमें मैं अगर VM लॉन्च करूंगा तो कैसे लॉन्च करूंगा? क्योंकि आज का जो OS है, मींस 10 हो गया या 11 हो गया, ये तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 GB ले जाते हैं, राइट? ओके, आज का जो विंडोज का OS होता है वो ज्यादा से ज्यादा 4 GB ले जाता है। ओके, उसके बाद और बच गया मेरा 8 GB से 4 GB चला गया, तो यहाँ पे कितना है, और 4 GB बाकी है, राइट? तो ये 4 GB को अगर मैं एक सर्वर लॉन्च करूंगा, ओके, तो उसमें अगर मैं 2 GB दे दूंगा, और कितना रहेगा, 2 GB। तो अगर मैं ब्राउजर ये सब कुछ ओपन कर दूंगा तो ये सिस्टम भी हैंग होगा, राइट? तो इसके लिए ये एक स्टैंडर्ड और एक एवरेज लैपटॉप में, ओके, यू कैन नॉट रन मोर देन वन, ओके, और मोर देन कपल ऑफ VMs। ओके, इसके लिए
हम क्या कर सकते हैं, डॉकर यूज कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डॉकर। ओके, ऑल द डॉकर कंटेनर्स शेयर कर्नेल ऑफ द होस्ट। यहाँ पे कर्नेल क्या है, मैं लिनक्स क्लास में बताया था कर्नेल। ओके, कर्नेल क्या होता है, जैसे हमारा सर्विसेज चलता है, राइट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेस क्या क्या यूज होता है, उसको जैसे हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, हार्डवेयर एंड ड्राइवर्स, राइट। हमारा विंडोज में हार्डवेयर एंड ड्राइवर्स, राइट। तो उस केस में ये लिनक्स प्लेटफॉर्म में, ओके, हिंदी इज कंफर्ट और टॉक इन इंग्लिश इज कंफर्ट। Anyone else? Hindi comfort or English? I can talk. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, कर्नेल जो होता है हमारा कहाँ पे आता है, लिनक्स बेस में आता है, राइट। ये कर्नेल कहाँ से शुरू होता है, लिनक्स बेस में। तो हमारा जो कंटेनर है वो क्या करता है, शेयर कर्नेल्स। तो अगर ये कंटेनर लिनक्स, सॉरी, कर्नेल को यूज कर रहा है, तो कंटेनर भी एक लिनक्स का ओएस होता है, राइट। ये सर नो, लिनक्स का कंसेप्ट, जो कंसेप्ट में कर्नेल आता है, राइट। ये कर्नेल क्या करता है, हार्डवेयर को हार्डवेयर को मैनेजमेंट करता है, राइट। ओके, तो ये कंटेनर अगर हम चलाएंगे तो उसका कर्नेल डिस्ट्रीब्यूट होगा, मीन शेयर होगा। तो एक कंटेनर जो चलेगा तो वो भी एक लिनक्स का प्लेटफॉर्म होगा, राइट। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, पहले से मैंने बताया था, एल एक्स सी बताया था, राइट, एज ए कंटेनर। ओके, लिनक्स कंटेनर्स, लिनक्स कंटेनर्स, that means a container concept comes from the linux os, got it। और ये जो कंटेनर चलाने के लिए हमको कहाँ से रिसोर्सेस आना चाहिए, ये जो लिनक्स कंटेनर में कर्नेल है। ओके, ये कर्नेल क्या करेगा, हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करेगा, किसके थ्रू, हमारा होस्ट सर्वर के थ्रू। तो होस्ट मशीन हमारा कौन सा है, हमारा विंडोज है, राइट। तो विंडोज यहाँ पे है 10 और इसका हार्डवेयर है 8 GB। तो इसमें मैंने डॉकर इंस्टॉल कर दिया, तो इसके अंदर जो भी कंटेनर चलेगा यहाँ पे कर्नेल होगा, राइट, कर्नेल होगा। ये कर्नेल कहाँ से डाटा लाएगा, इस 8 GB से डाटा लाएगा, शेयर करेगा, राइट। तो इसके वजह से हमारा क्या होता है, ये कंटेनर वर्क, ओके, एज ए लिनक्स वीएम। ओके, क्योंकि ये लिनक्स कर्नल को रीड करता है, कौन, ये जो हमारा कंटेनर है। ओके, container start up in seconds, but here if you see, in VM starts within minute, okay, and container start up in minute, okay, sorry, in seconds. Okay, can run many docker containers in a laptop. Okay, but if you see here, in a laptop we cannot run number of VMs, but here if you can run multiple containers in your laptop, okay, as comparison to VM. Okay, got it or any doubt? Okay, so we discuss on container. Okay, a container is a standard unit of software that packages code and all its dependencies
so the application can run. Okay, so here if you go through this definition, okay, a container is a standard unit of software that packages code and all its dependencies so the application can run. So here container कंटेनर क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो क्या करता है, एक पैकेज कर देता है, ओके, हमारा एप्लीकेशन को चलाने के लिए, ओके, और उस ये एप्लीकेशन चलने के लिए उसका क्या डिपेंडेंसी है, ओके, और ये डिपेंडेंसी को लेकर, ओके, हम जो बोलते हैं बाइनरीज एंड लाइब्रेरीज, राइट, तो इस डिपेंडेंसी को लेकर हमारा एप्लीकेशन क्या करता है, चलता है, कैसे, एज ए कंटेनर, राइट और रंग। Okay, so next point is a Docker container image is a lightweight, standalone, executable package of software that include everything need to run an application code. If you see here, every line this point is coming, right? Okay. Need to run an application code. कोड चलने के लिए, ओके, कोड चलने के लिए जो जरूरत है, ओके, उसको लेके क्या करता है, पैकेज बनाता है, ओके, रन टाइम्स, सिस्टम टूल्स, सिस्टम लाइब्रेरीज एंड सेटिंग्स, ये सब कुछ मिला के एक हमारा क्या होता है, डॉकर कंटेनर इमेज रहता है। और हम जब क्या करते हैं, डॉकर इमेज को चला देते हैं, वो क्या होता है, एज ए कंटेनर चलता है, राइट। तो ये सब कुछ पैकेज करके आज ये इमेज हो जाता है, राइट। और हम जब इस इमेज को चलाते हैं, रन करते हैं, वो क्या होता है, कंटेनर होता है। कितना अच्छा चीज है, जो समझो। तो ये मैं पैकेज बना दिया, इस पैकेज को जब मैंने रन कर दिया, ये कंटेनर बन गया, ओके। जस्ट एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करना चाहते हैं, आ, कौन सा एग्जाम्पल दूं, एक सिंपल सा क्रोम, हाँ पूछो पूछो। ओके, 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 आप चाहते हैं हम जब पुल करते हैं, राइट, ओके, तो ये जो पुल होता है इमेज, ओके, ये किसके लिए होता है, ओके, राइट, ये जो डिपेंडेंसी डाउनलोड करता है किसके लिए होता है, राइट, राइट, ओके, हाँ हाँ, that means you talk about hardware resources, right? Oh, already I have shared that one, right? ऑलरेडी आई हैव शेयर दैट वन, ओके, मैंने जब यहाँ पे बताया ना, ओके, डॉकर कंटेनर, राइट, शेयर कर्नेल्स में, कर्नेल जब क्या बताया, कर्नेल क्या होता है, हार्डवेयर रिसोर्सेस होता है, ओके, तो हमारा लिनक्स सिस्टम पे एक कर्नेल होता है, राइट, ओके, ये
कंटेनर हमारा कैसे चलता है? थ्रू द एज ए कंटेनर, राइट? तो ये कंटेनर क्या होता है? एक लिनक्स बेस्ड कंटेनर मीन्स इट इज ए प्लेटफॉर्म फ्रॉम द लिनक्स। ओके, तो अगर हम लिनक्स में चलाते हैं, कंटेनर इज नथिंग बट इट ए लिनक्स प्लेटफॉर्म। ओके, तो हमारा जब लिनक्स में चलता है तो लिनक्स को हमारा कैसे मैनेजमेंट होता है? थ्रू द कर्नेल, राइट? तो कर्नेल क्या करता है? शेयर करता है किसको? हार्डवेयर रिसोर्सेज को। ओके, कहाँ से करता है? हमारा ये होस्ट मशीन से। तो होस्ट मशीन कौन सा हो गया? मेरा जो लैपटॉप हो गया, राइट? ओके, तो ये लैपटॉप से हम जब एक कंटेनर चलाएंगे ना, यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा लैपटॉप है। ओके, तो इस लैपटॉप में मैं दो कंटेनर चलाना चाहता हूँ, राइट? और इसमें क्या है? 4 GB का रैम है। ओके, हमारा जैसे पता है हमारा लिनक्स में क्या होता है? कर्नेल होता है, राइट? तो हमारा ये जो यूज होगा दो कंटेनर, एक कर्नेल है, ये भी कर्नेल है, राइट? ये कंटेनर 1 के लिए है, ये कंटेनर 2 के लिए है। तो ये जब चलेंगे ना, रनिंग होंगे, तो कहाँ से रिसोर्सेस लाएंगे? क्योंकि हमारा यहाँ पे कर्नेल जो है वो शेयर करता है कहाँ से? गेस्ट, सॉरी, होस्ट ओएस से, राइट? तो होस्ट ओएस से क्या करता है? कर्नेल शेयर करता है डाटा और हार्डवेयर रिसोर्सेज से कलेक्ट करता है। तो जब ये दोनों कंटेनर चलेंगे ना, तो कहाँ से रिसोर्सेस यूजेस होगा? हमारा जो विंडोज लैपटॉप का सर्वर होगा, राइट? लैपटॉप का जो रैम होगा, रिसोर्सेस होगा, तो वहां से कलेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? जब चलेगा कंटेनर, तब क्या करेगा? यहां से हमारा रिसोर्सेस यूज होगा। ओके, गॉट इट? हाँ हाँ, एक्चुअली मैं लिनक्स क्लास में बता दिया था। ओके, राइट 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 राइट, मैंने जो पहला क्लास था ना लिनक्स का, उसके बारे में बता दिया था कर्नेल क्या होता है। ओके, तो कर्नेल क्या होता है? आपका जो सर्वर में वो चलता है ना, जो होस्ट ओएस होता है, ओके, होस्ट सर्वर होता है, वहां से क्या करता है? कलेक्ट करता है रिसोर्सेस को। मींस हार्डवेयर क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी कितना है, ओके, उस चीज को रीड करता है थ्रू द कर्नेल। ओके, और एक होता है सेल। ओके, लिनक्स में हमारे दो कंसेप्ट है, एक होता है लिनक्स में होता है कर्नेल और एक होता है सेल। ओके, डाउट क्लियर और अगेन? ओके, जस्ट रिमेंबर, कंटेनर आज ए लिनक्स प्लेटफॉर्म। ओके, और ये जो डाटा भी रिसोर्सेस कलेक्ट करेगा ना, जब चलेगा ना, वो सबसे होस्ट मशीन से ही कलेक्ट करेगा। मींस जो भी डाटा कलेक्ट चलेगा ना, वो कहाँ से लाएगा? जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेस, वो कर्नेल के थ्रू होस्ट ओएस से, होस्ट सर्वर से लाएगा। ओके, क्लियर? Okay. So Docker containers that run on Docker engine. Okay. तो Docker engine में हमारा क्या होता है? Docker कंटेनर चलता है। ओके, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे, ओके, तो ये मान लीजिए, ओके, मेरा तो डायग्राम अच्छा नहीं है। ओके, मान लीजिए ये सीप है। ओके, ये डॉकर का लोगो है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? कंटेनर रहता है शिप में, राइट? अगर हम यहाँ पे कंटेनर से स्टोर करके दुबई भेजेंगे, ओके, तो ये दुबई जाने के लिए कैसे जाएगा? ये तो शिप होना चाहिए ना, राइट? तो ये है इंजन। अगर ये इंजन नहीं चलेगा, ये कंटेनर जा पाएगा क्या? ओके, तो इसीलिए ये हमारा इंजन है। ओके, डॉकर इंजन। डॉकर इंजन के ऊपर हमारा क्या होता है? कंटेनर हो जाता, स्टोर होता है। ओके, कंटेनर चलता है। अगर हम शिप में भेजेंगे दुबई और कहीं सऊदी अरब और लाइक मालदीव, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस को हम भेजेंगे कुछ कंटेनर, तो उस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक इंजन चाहिए, जो शिप चाहिए, वो शिप के ऊपर हमारा कंटेनर स्टोर होगा। वो कंटेनर को कैरी करके हमारा डेस्टिनेशन में चलेगा। तो डेस्टिनेशन हमारा क्या है?
होस्ट है, होस्ट मशीन है, राइट। तो होस्ट मशीन पे हमारा डॉकर इंजन इंस्टॉल होगा। ये डॉकर इंजन इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेनर चलाएंगे। ये इतना ही कंसेप्ट है। ओके, ज्यादा कुछ नहीं। ओके, दैट मीन्स हियर हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा होस्ट मशीन, राइट। होस्ट मशीन पे हम डॉकर इंजन इंस्टॉल करेंगे। ये डॉकर इंजन इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे कंटेनर चलेगा। और उनका जो डाउट था, ये होस्ट मशीन में जो भी हार्डवेयर होगा, ओके, ये हार्डवेयर कहाँ से कलेक्ट करेगा, ये यहाँ पे जो डॉकर इंस्टॉल हो जाता है, ओके, यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक कनेक्शन होता है होस्ट टू ये इंजन, ओके। और यहाँ पे हम अगर यहाँ पे कंटेनर वन चलाएंगे, ओके, कंटेनर वन, तो यहाँ पे तो कर्नेल है, राइट। तो कर्नेल बात करेगा डॉकर इंजन से। डॉकर इंजन क्या करेगा, शेयर कर देगा यहाँ पे जो हार्डवेयर है, भाई मेरा ये कंटेनर चलेगा, तुम मुझे दे दो इतना रिसोर्सेस, ओके, 1 GB दे दो, ओके। और एक कंटेनर चलेगा, कंटेनर टू। तो एक काम करो भाई, यहाँ पे जो कंटेनर मेरा दो चलेगा, तो उसके लिए कुछ रिसोर्सेस दे दो। तो यहाँ पे भी एक कर्नेल होगा, राइट। तो ये कर्नेल बात करेगा, फिर यहाँ पे हार्डवेयर रिसोर्सेस से कलेक्ट करेगा, कहाँ से, ये होस्ट से, राइट। तो जो भी रिसोर्सेस यूज करेगा फ्रॉम दी होस्ट, ओके। तो यहाँ पे जितना भी कंटेनर तुम चलाओगे ना, उतना कंटेनर यहाँ पे चलेगा, कहाँ, किसके रिसोर्सेस के थ्रू, होस्ट मशीन के रिसोर्सेस के थ्रू, ओके। सिमिलरली जैसे हम लोग मशीन यूज कर रहे थे ना, ओके, जैसे हम लोग वीएम यूज कर रहे थे, ओके, यहाँ पे रह गया हमारा होस्ट ओएस। और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। उसके उसके ऊपर हमारा क्या होता है, हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर के ऊपर हमारा एक वीएम लॉन्च हो गया। तो ये वीएम कहाँ से रिसोर्सेस लाएगा, ये होस्ट से, राइट। तो सिमिलरली हमारा कंटेनर तो चलेगा, ओके। ये कंटेनर कहाँ से लाएगा, ये जो रिसोर्सेस यहाँ पे कंटेनर चलेगा, ये डॉकर इंजन, इंजन का एक कंटेनर के अंदर कर्नेल, कर्नेल बात करेगा। कर्नेल बात करके हमारा यहाँ पे होस्ट मशीन होगा। ये होस्ट सर्वर से जो भी डाटा रिसोर्सेस है, जितना भी आपका हार्डवेयर रिसोर्सेस है, वहां से कलेक्ट करेगा। गॉट इट। ओके, सो हाउ टू इंस्टॉल डॉकर, देखते हैं डॉकर कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, थ्रू दी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे। हाँ, ସୁମିତ କୁମାର ଯେ କହୁଛୁ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି। ହଁ 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 ହଁ। अरे ये साला ମୁଁ କାଇଁ ବସି ପଢଉଛି ଏ ସମୟ ବା। ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦି ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବୀଟା ଯୋଉ କାଲି ନା ପରଦିନ କଥା ହଉଥିଲା, ସିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ, ଆଉ ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଏନ କରିଥିଲା, କାଇଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କଣ ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମାନେ
କଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି? ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି, ଫେର ପଳଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କନଫର୍ମ ହବାକୁ ପଡିବ। କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ନା କରିବେନି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ବସିକିରି ଆଙ୍କ ସହିତ ଘଷି ହବା କଣ ଦରକାର? ତା ଦେହ ଖରାପ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ବସିକି ଘାସି ଘାସି ହଉଛି। ଏ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲାଣି? ହୁଁ। ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଟିକେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା। ହଉ 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 ଦେଖିଆ। ମୁଁ ଏପଟେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାରିଦେବି ଶୀଘ୍ର ତାହେଲେ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ହୁଁ 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 ହୁଁ। ହଁ ଥୋଇଦିଅ। ନା ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ଥାଉ। ମୋର ସରିବ, ମୋର ସରିଲା 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଅଛି, ଖାଲି ଇନଷ୍ଟଲେସନ। ହଉ ହଉ। So here we go through the official documentation. So just a simple put download Docker. Okay. That's it. If you see here, come to from the Docker desktop. Install Docker. Install Docker. Okay. If you come here, you see there is a different OS flavor is there. Okay. You can choose as per your OS and then you can install on that. Okay. Here in my server, that is a CentOS server. Okay. So here I choose CentOS. Okay. Then come to here and put these commands. Okay. Just copy and paste here. Then come to next command and put here. Then here you can install these commands. Okay.
Okay, then come to next command. Sudo systemctl start docker. Copied that one and paste here. If you want to check your status, and you can put here sudo systemctl status docker. Now docker is running. Okay, docker.service. Okay, active and running. Okay, if you want to check uh, containers are running or not, or some images is there or not, simply put docker ps. Okay, docker images. I'll give all these commands and the use cases. Okay, so if you see here, uh, there is no container is running and there is no images is there. Okay, so now today we install the docker. Okay, then on next class we'll go through the docker container lifecycle and docker images, docker file, docker network. Okay, डॉकर कंपोज. ओके, ये सब कुछ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम सब कुछ पढ़ेंगे. आज के लिए बस हमारा यहाँ तक एंड है और यहाँ पे हमारा डॉकर इंस्टॉलेशन हो गया है. ओके, किसी का कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं.